गुड आफ्टरनून व्यूअर्स व्हेर एवर यू आर आपण मैंने बर्तमान सकाल विद्यासागर क्लासेस यूट्यूब चैनल आज जो OTET घन घन वीडियो आंसर की आपण मानक दि जाऊँगी तो सही जो चेन ऑफ वीडियो चलती बर्तमान आम आणिक आमर इंग्लिश सेक्शन तो ये वीडियो टी देखिले इंग्लिश सेक्शन में आप जो गुड़िक आज अटेम्प्ट करिसेंती तार करेक्टनेस आप काउंट करें जानीपारे और किछिटा नॉलेज एनलाइटन हेबे। तो चलतु आमर ये इंग्लिश वीडियोटी आरंभ करिबा। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। रीडिंग एन अनसीन पैसेज इन द एग्जामिनेशन हॉल कम्स अंडर ऑप्शन गुड़िक देखंतु एक्सटेंसिव रीडिंग, रीडिंग फॉर प्लेजर, मेक हैप्पी द इवैल्यूएटर, नो इंटेंसिव रीडिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इंटेंसिव रीडिंग। तो आपण इंटेंसिव रीडिंग टी को सेकंड क्वेश्चन देखंतु जोटा कि रिपीट होती सकाळे भी पड़ीथिला तेणु देखंतु सेकंड क्वेश्चन कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए रिसेप्टिव स्किल लिसनिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो लिसनिंग एंड रीडिंग ऑप्शन ए। तापर आमे आसीबा 63 गोटे क्वेश्चन टैग आसी क्वेश्चन टैग इनवर्सन माने एपटे पॉजिटिव थे सेपटे नेगेटिव भाइस वर्सा। तो कौन अच्छे क्वेश्चन टी व्यूअर्स देखिबा ही इज ए स्ट्रेंज मैन, ही इज अच्छी पॉजिटिव अच्छी तो क्वेश्चन टैग हेले कौन हम नेगेटिव इजंट ही एठी आपण प्रथम ही आंसर पाई गलनी। सो देयर इज नो नीड टू मूव फर्दर कारण ऑलरेडी वी हैव कम टू द आंसर। ही इज ए स्ट्रेंज मैन इजंट ही। Then question number 64, identify the grammatically acceptable sentence। तो grammatically incorrect sentence दिया जाइए। तो देखी दबा school begins at 10 o'clock। तो ऑप्शन स्कूल begins at 10 छोटो अच्छी 10 स्कूल अच्छी स्पेसिफिक हो जाए हेनी ए स्कूल भी हेनी तो जेनरलाइज स्कूल रे स्कूल begins at 10 o'clock। तो आंसर इज ए 64 ए। तापर आमे आसीजिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन 65 को। तो आ पूर्व गोटे पैसेज देछि फ्रेंड्स। तो चलतु पैसेज टिके रीड करदबा सो दैट यू विल हैव एन ओवरऑल आइडिया बिफोर आई डाइव इनटू द क्वेश्चंस। वंस अपॉन ए टाइम गोटे गल्प अच्छी स्टोरी अच्छी भल लगे शुणिले मोराल भी आपण मैंने पाइबे ता भितर। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग हु वांटेड टू मेक ऑल हिज सब्जेक्ट्स, एटी सब्जेक्ट्स माने पले सिटीजन्स नागरिक, सब्जेक्ट्स हैप्पी एंड कंटेंटेड तांको संतुष्ट भी रखा चाहूँगे खुशी भी रखा चाहूँगे कंटेंटेड माने संतुष्ट। सो ही आस्क्ड देम टू कम टू हिम विथ देयर ग्रीवियंसेस। तो से तांकर कौन कौन अभियोग रही से अभियोग आनिकी तांको आसिया पई से कहले। तो से ग्रीवियंस माने तांकर आमे देखिबा अभियोग सेइंग ही वांटेड टू लिव। जड़े प्रथम गोटे व्यक्ति आसी से कौन कह शुणा one man came to him saying he wanted to leave his small hut। hut माने कुड़िया पिले, hut माने चाल घर कुड़िया in a palace से चाहूला गोटे महल रे रहिबा पई। next a woman who had a fruit stall complained that an old lady the next stall used to sell old clothes and asking that she might be removed। द्वितीय लेडी रो कंप्लेंट थिला तार पड़िसा वृद्धा महिला को लुगा बिकिबारु बारण करा जाऊ। Another man asked permission to put his old unsafe boat which the harbour master had condemned out to the sea। से चाहूला समुद्र को तार जो अनसेफ बोटा जावाक दि जाऊ। तो एमती तीन जन अभियोग आनिक आसिले। तो किंग राजा बुद्धिमान लोक ही ग्रांटेड ऑल दिज रिक्वेस्ट से समस्त को हाँ करदे। तापर कौन तार आफ्टरमाथ होती आम देखा। A little later however the first man came offering to give up his palace। किसी समय पर प्रथम व्यक्ति आसिले किसी दिन अतिबाहित होला परे कहला आज्ञा आई वांट टू लीव द पैलेस। ही फाउंड ही हैड टू बिहेव सो केयरफुली एंड कीप सच ए स्टेट इन इट दैट ही लॉन्ग टू गो बैक। एटी लॉन्ग माने डिजायर, एटी गोटे डिफिकल्ट वर्ड अच्छे पे जानी थाओ। तो एटी लॉन्ग गोटे डिफिकल्ट वर्ड सो पैसेज गुरा तुम मानकर वोकाबुलारी बढ़िबो। तो एंड कीप सच दैट ही लॉन्ग माने तुम डिजायर।
to go back to his comfortable little hut where he was happier. ताମାନେ से बड़ जगह सेठी से comfortably रही पाइलानी. The woman who also complaining she had lost all her customer for they came fast to buy clothes from the neighboring stall and stopped to buy fruit before they went home. तो जो सेकेंड लेडी अभियोग करता पड़ीसा लेडीज विषय से भी रियलाइज हर फोली और मिस्टेक. देन व्हाट हैपेंड टू द मैन विथ द बोट जे कि अनसेफ बोट को लेकिन समुद्र को वेंचर करथिला. वेल ही सर्टनली डिडंट रिटर्न टू कंप्लेन फॉर हिज बोट वाज पुट आउट टू सी as soon as the king had given permission. माने से समुद्र को यात्रा करथिला and neither the boat nor the owner was ever heard of again. समुद्र लहरी रे से कुआडे हजि गला, लिटरली ड्राउन्ड हे गला, बुडी गला. तणु एथरो आमे गोटे लाइफ लेसन गोटे मोरल स्टोरी जानले वी नीड टू बी कंटेंट. गौतम बुद्धंकर जो एवरग्रीन एंड ऑफ डिजायर इज एंड ऑफ सरो इज क्वाइटली रिफ्लेक्टेड इन दिस पैसेज. ओके तो एबे आमे क्वेश्चन को आसी जिबा जोटा कि हमर 65 रु स्टार्ट हिची. The three dissatisfied persons in the passage must have learned the lesson that there should be a limit to one's desire. That is the perfect answer. So our first answer is A. 66. The main purpose of the passage is to tell us an amusing story, bring out a moral, throw light on king's greatness, show how foolish individuals can be. तो एमती जदि आम देखा दुईटा मीनिंग आसुची ब्रिंग आउट ए मोराल आउ शो हाउ फुलिश इंडिविजुअल कैन बी. सो ऑब्वियसली आम गोटे मोराल लेसन गोटे बड़ लेसन जे जोटा भगवान आमको देइछन से जानिक देइछन वी मस्ट लर्न टू बी हैप्पी विथ व्हाट एवर पोजेशंस वी हैव विथ अस. सो दैट इज द राइट आंसर. द ब्रिंग आउट ए मोराल ए पैसेज रे आस्ती तो एटा हमर करेक्ट आंसर जो माने देइछंती दे विल फेच 1 मार्क. देन तापर आम देखिबा द फ्रेज पुट आउट टू सी इन द पैसेज मीन्स condemned, set sail, set free, put an end to. तो put out to sea माने से समुद्र को यात्रा करिया चाहूतले. set sail तो set sail टिके जो माने करछंती से माने they will get 1 mark. Then आमे 68 को देबा. The man who went to sea in his boat did not return and the king to the king probably because obvious कथा ता बीटा माने बुड़ी जाइथियो बोली आमे गेस करछु. तेणु इट वाज ड्राउन. तो आंसर इज डी. देन आम 69 क्वेश्चन को आसवा पैसेज द फास्ट मैन वाज हैप्पियर इन हिज लिटिल हट देन इन द पैलेस बिकॉज ही कुड लीड ए सिंपल केयर फ्री लाइफ. कारण सेठी से तार छोट येटा को मेंटेन करबा सहज होतला और सेठी थिला बाकी ऑप्शन गुड़ा हेनी कहीं द पैलेस वाज टू बिग फॉर हिम. कोडी मेंशन नाही. पीपल डिड नॉट ट्रीट हिम लाइक ए किंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. ही वाज टू हम्बल टू लिव इन ए पैलेस. So answer is A. The process of dividing sentence into few sentence group while reading is known as this is a pedagogy question and it is chunking or a detailed explanation that chahucho amar honorable the best pedagogy teacher Satya sir will explain in a separate class. So answer is chunking. Then we will move to 71 primary requirement of writing a composition or essay is आम essay कहीं लिखु sequencing, vocabulary, idea and style. Actually आमर composition essay most probably expansion of idea. तो answer is idea. C. The book is interesting to read. Book is. The boy is good. So it is adjective. कारण यहाँ आमर predicative sense रे यूज होइछि. तेणु this is answer 72. इट इज एडजेक्टिव जो माने करछंती सेटा ठीक अछि काहेकि ना जदि एटा आईएनजी फॉर्म भलिया देखा जाउछि बट इट इज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल. पार्टिसिपल इज अ वर्ड व्हिच लुक्स लाइक ए वर्ब बट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव. सो दिस इज एडजेक्टिव. तेणु एडजेक्टिव नॉट नेसेसरली गोटे गुड ब्यूटीफुल बा इंटेलिजेंट. एडजेक्टिव बेले आईएनजी आमे जेमते कहू इंटरेस्टिंग पिक्चर, चार्मिंग बॉय, अमेजिंग मूवी, इंटरेस्टिंग बुक. तो एठी सेमती इंटरेस्टिंग वर्डटा गोटे एडजेक्टिव. ओके तापर आमे 73 नंबर क्वेश्चन को मूव कर जिबा. आई कांट लिफ्ट द बॉक्स. द फुल फॉर्म ऑफ कांट इज ऑब्वियसली एटा हमर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म रे अछि. तेणु एटा कैन नॉट. नो प्राइजेस फॉर गेसिंग. कैन नॉट बी. तापर 74 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फॉर लर्निंग लैंग्वेज एट द बिगिनिंग. एटा गोटे हमर पेडागोजी क्वेश्चन अगेन. तो आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस एक्सपोजर. अदर ऑप्शन टीचिंग, एक्सप्लेनेशन, परसुएशन हेनी. एटा हम एक्सपोजर. देन आम 75 को आसवा
which language skill competency is considered most important in teaching learning English in India? तो कौथरे तुम competency will be tested? ऑप्शन गुड़िक देखा listening, speaking, reading, writing. तो obviously in writing your competency, all the competency will be tested. तो answer is for writing. Okay. तापरे आपण माने आसंतु next question 76 को आसंतु. Complete the answer to the question what time does the bus leave? Mohan asked me what time the bus. देखो ये asked पचारची ता पूर्व बस past of the past perfect कोड अछि hard left. तो जो माने hard left करछंती they will fetch their desired mark. तो this is hard left because it is in जेतु asked अछि past perfect. Then आमे 76 रो क्वेश्चन हमर सरी जाईची. आमे आसी जिबा 77. Identify the most appropriate and right sentence. You should avail of. देखो avail लागिला माने word followed by preposition गोटे of निहाती लागिवो. तेणु avail बाकी एटा गोटे आपण माने रूल ऑफ थंब नहीं पारंती. आउ कोठी avail पाखरे ऑफ नाही. तेणु एलिमिनेशन मेथड रे आमे जदि देखिबा जेतु प्रथम रा avail पर ऑफ अछि जेमति कि आपण मानकर गोटे गोटे पर वर्ड पर जेमति इन अकॉर्डिंग विथ से भलिया avail of. तो आंसर इज 77 ए कारण एटा वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन जो अछि सही हिसाब रे आपनकर हला ए. देन आपण आसी जानतु 78 नंबर प्रश्न को आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग. ही इज टायर्ड एंड सो आर यू. तो ही इज टायर्ड सो यू आर. ही इज टायर्ड एंड सो आर यू. So this is the correct form of answer. So are you C? The answer is C. Then come to the next question. So before that, you see, find the correct sentence among the following. I will have you all to speak English. एटा को आमे देखि दबा टिके भलो कि तापर आपण माने जानि परिए correct sentence form. I will have you all to speak English well within a year. I will have you all speaking English well within a year. I will have you all speak English well within a year. I will have you all of speaking English well within a year. तो चारिटा ऑप्शन अछि. प्रथम ऑप्शन को आमे एनालिसिस करे. I will have you all to speak हबनी कारण all परे आपण 2 प्लस इन्फिनिटिव देई परिबे नाही. इट इज I will have you all but speaking English well within a year. I will थर्ड क्वेश्चन I will have you all जीरो इन्फिनिटिव देछि जेरन देइनी किंतु ऑल परे व्हाट. तनु एटा भी रॉन्ग हे जिवो कारण एटा कोनसी इन्फिनिटिव नाही बेस इन्फिनिटिव हे जाइछि. आई विल हैव यू ऑल ऑफ हबनी. तनु ऑब्वियसली आंसर इज बी. आई विल हैव यू ऑल स्पीकिंग इंग्लिश वेल विद इन ईयर. आंसर इज बी. तो जो माने बी करछंती दे विल फेच 1 मार्क. इट इज लिटिल बिट नॉन फाइनाइट क्वेश्चन. तनु यू माइट हैव स्ट्रगल्ड बट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द डिटेल. देन आमे आसीबा गोटे करेक्ट स्टेटमेंट पचारछि. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट. एटा पेडागोजी क्वेश्चन टा अछि. तो आर आंसर मु आपन को डायरेक्टली दे दोछि. आर आंसर टी आपन को हबो assessment during teaching learning process is more useful. Summative assessment is useful for redesigning and strategies. This is the correct answer. Then question number 81. Which of the following implies to utter with more degree of force? So केतबेला आमे इंग्लिश रे तळे स्ट्रेस दो दैट मीन्स इंपोर्टेंस रे फोर्स दो. तो एटा पूरा डायरेक्ट आंसर हमर आछैछि. तो एटा आपनकर हबो स्ट्रेस. तो स्ट्रेस कोठी अछि लिखा हिछि आपन माने टिके नजर पकांतु. दिस इज स्ट्रेस. 81. तापरे 82 को आसीबा. चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर among the following. Your answer is 100% हबनी. 100% A 100% हबनी. 100% हबनी. Your answer is 100 and 100 are correct, but 100% is more appropriate. So answer is B. तो हमर डियर व्यूअर्स तमान जदि B करिछो ताले संपूर्ण रूपे ठीक करछो. आंसर इज B. तापरे आसी जाओ हमर क्वेश्चन नंबर 83 को आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. 83 वैक्यूम, वैकम, वैक्यूम.
the answer is A. Correct spelling is answer is A. Vacuum शून्य स्थान. Primary objective of teaching learning English in India is to एटा गोटे पेडागोजी क्वेश्चन अगेन आछि तो आमे देखिबा कौन कौन ऑप्शन अछि एनश्योर बेटर एम्प्लॉयमेंट परस्यू हायर एजुकेशन and the third one is develop communication skill remain updated about development. So obviously objective of teaching learning English in India is to develop communication skill because it is a second language in India, that is to develop communication skill. 85 identify the false statement. English empowers people to get any information offered by internet. English has not only become a trend but a mock pursuit also. English as a second language is not available in Odisha state. I think in Odisha English is readily available. Being in Odisha, all of you must have felt it. So no prizes for guessing. Answer is C. कारण ओडिशा रे एटा गोटे सेकेंड लैंग्वेज हिसाब रे अछि नाही बिले जो लिखा है सेटा भूल लिखा है तेणु आपण मानकर आंसर एटा फॉल्स स्टेटमेंट हबो. तो 85 हमर सरी गला आमे मूव कर जिबा वर्तमान गोटे पोएम ऊपर किछि क्वेश्चन अछि. लेट अस रिसाइट द पोएम then you can easily will be able to answer. I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top giving the poor beneath drop after drop. This a sweet noise to hear these green leaves drinking near, and when the sun comes out after the rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright till be a lovely sight. So ame dekhile the poem primarily kaha upare कहूची प्राइमरली सन सॉरी रेन कारण रेन टा थ्रू आउट होती सन को होप रखाई आसो बोली बट रेन उपर आमर पैसेज टी अच्छी तेणु जो मैंने रेन उपर करिसेंती दे हैव आंसर्ड इट करेक्टली रेन. देन 87 क्वेश्चन को आसी जिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वंडरस. देख पिले ऑप्शन मार्वेलस अनएक्साइटिंग टायरसम टीडियस मार्वेलस. वंडरस एंड मार्वेलस आर सिनोनिमिकल. चित्ताकर्षक जोटा आपण माने ओडिया रे कहउछंती मार्वेलस इज द करेक्ट आंसर. तो जो माने मार्वेलस करछंती दे हैव आंसर्ड इट करेक्टली. लीव्स ऑन टॉप प्रेजेंट रिच पीपल पुअर पीपल ग्रीन लीव्स पोएट एंड द सन. तो हियर ग्रीन लीव्स आर द करेक्ट आंसर. देन आमे आसी जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को हमर 89 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए सिंबल ऑफ होप. अथर देख लास्ट जो पैराग्राफ रे सन आसिले लवली साइट सब आसो बोली आशा प्रकाश करछंती तेणु आम एठी सन इज ए सिंबल ऑफ होप बोली आपण मान जदि करथिबे यू हैव आंसर्ड ऑलमोस्ट करेक्टली. तापर आम आसीबा the word I used in the poem refers to so it is a personification. तो रेन को अथर एठी ये करछंती तेणु आंसर जो माने एठी रेन करछंती दे हैव आंसर्ड इट करेक्टली काहेकि ना रेन को अथर निजे पर्सनिफाइड हेके आछंती तो रेन. तो व्यूअर्स आपण माने हमरो इंग्लिश डिस्कशन रो किछिटा नॉलेज गेन करथे बिली मो होपफुल अछि. कीप वाचिंग विद्यासागर यूट्यूब चैनल बिकॉज आजिर दिनटी हमर ओटीटी एस्पिरेंट्स मान पई गोटे बहुत इंपोर्टेंट दिन थिला से माने परीक्षा दैछंती एंड आई एम प्रेटी श्योर आज जो वीडियोज आम अपलोड करूँ आपण एगुड़िक अनेक माने जो तार जो मार्क्स गुड़िक आप रखिंट आंसर कीज गुड़िक संपूर्ण रूपे पाई एवं सही ये आप इंग्लिशटा पाइले एंड अदर्स वीडियोज आर गोइंग टू बी अपलोडेड सून. सो लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन so that our videos related to TET videos you will get at regular interval and notifications. And those amongst you are aspirants for JT and RST batch Bidyasagar Classes coaching center जोटा कि TET program पे most affordable quality coaching and the most successful coaching institute in Odisha is providing. तो जो Google form टी आपनकर description में दिया जायछि ताको fill up करि नियंतु और से थ्रू आमे हमर जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपनकर एडमिशन मेड बी ऑनलाइन और ऑफलाइन फैसिलिटेट करिवे विथ गुड डिस्काउंट बिकॉज यू आर आवर मेन स्टेक होल्डर्स. स्टूडेंट मानन पई हमर सार माने आज बहुत परिश्रम करछंती और आंसर के दैछंती सेति पई मु सेमान को मध्य धन्यवाद दउची. सो कीप वाचिंग विद्यासागर क्लासेस यूट्यूब चैनल.
थैंक यू।